Wish you good day, my dear class. We have completed our unit 1 and now we are going to do the miscellaneous exercise. It is the combination of all the exercises that we have done. So let's go through them to test our wisdom. First is make suitable words with following prefixes. So the prefix is given and we have to write the words. Admit, we can go with advice, adverse. Students, you can add your own prefix also. Is it okay? You can add your own suitable word also in this prefix. For example, admit, admission, anything you can write. React, refill and reuse. Is it okay, students? Next is able is given here. This is second part. Make suitable words with following suffixes. Suffixes are given and we have to add a suitable word. For example, capable, suitable. Here you can add adorable. Yes, students, adorable. You can make this word. Next is ly is given. The suffix ly is given. You have to make word quickly, slowly, rapidly, briskly. Anything you can write. Is it okay? Neatly. Anything you can write. Next is write the meaning of the following expressions. This is again so interesting. In black and white. When we say in black and white, it means in print or in written form. Next is to keep an eye on. किसी पर पूरी नजर रखना. To watch carefully. We will go with the expression to watch carefully. Next is in pink of health. We all love to be fit and fine. Eye catching. Eye catching means very attractive. After one's heart. After one's heart means students someone very much loved. Something or someone. कुछ ऐसा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. After one's heart. Next is he is saying I complete the following sentences. Okay. I am a spendthrift. I freely. बेटा spendthrift होता है जो खर्चीला होता है बहुत ज़्यादा. तो अब जो बहुत खर्चीला है तो क्या करेगा? I freely spend money. I am an idealist. I believe in great ideas. I am an extrovert. I like कंपनी ऑफ अदर्स. मुझे एक्सट्रोवर्ट होता है बेटा जो बहुत बाहरी मुखी होता है. मीन्स उसे लोगों से मिलना जुलना. वेरी सोशल पर्सन. एंड नेक्स्ट इज आई एम एन इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट होता है बेटा जो अंतर्मुखी होता है. मीन्स अपने आप में ही रहना उसे पसंद है. ही डजंट लाइक टू बी सोशल. वेरी अनसोशल. सो आई एम हैप्पी टू बी अलोन. इज इट ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज हियर वी आर विथ क्वेश्चन नंबर 4. This is true false. We have to go through the statements and find whether these are true or false. The first one is tip is a small sum of money given to a waiter. Yes student, tip waiter को देते हैं ना, and it is a small sum of money. True. An audience is a group that gathers to listen to lecture. True. Yes beta. Guile is the term used for a very brave person. False. Next is Walt Disney was the creator of the cartoon character named Tintin. False. R.K. Lakshman was the creator of the cartoon stripe The Common Man. True. Yes students. Next is circle the odd one out. Now we do question number 5. First part is index, contents, preface, surface and bibliography. Now you see students that index, contents and prefix, all these are part of a book, but surface is not a part of a book. So this is the odd one. Next is poet, dramatist, numismatist, writer, playwright. All these, and here we are seeing that numismatist is odd one and poet, dramatist, writer, playwright, all these are related to writings. Yes students. But what is the meaning of numismatist? How it is different? Students, numismatist is a person who studies or collect coins or medals. बेटा जो सिक्के या मेडल्स को उनकी स्टडी करें, उनका अध्ययन करें या उन्हें कलेक्ट करें, उसको हम बोलते हैं उस पर्सन को, दैट पर्सन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस्ट. नेक्स्ट इज एजुकेटर, ट्यूटर, स्कूल टीचर, इंस्ट्रक्टर और फिलिलिस्ट. सो वी आर सेइंग दैट इन दिस फिलिलिस्ट इज द वर्ड दैट इज ऑड वन. Why this is odd one? Because it is all these terms related to education, but this is something different. And who is philologist? It is the study of postage stamp. Philologist is a person who deals with the study of postage stamps. Next is poem
and limerick, ballad, essay and rhyme. So which is the odd one? We are seeing that essay, as it is not related to the part of poetry. Poem and limericks and ballad and rhyme, all these are part of a poetry, but essay is not a part of a poetry, rather it is a part of a composition. You can, yes. Next is figure out the following analogies. Happiness relates to laughter. When we are happy we laugh, but sorrow leads to, when we are sorrow, then what we shed? We shed tears. दुखी होने पर हम आंसू बहाते हैं, खुश होने पर हम हंसते हैं, एंड सिमिलरली बेटा दुखी होने पर वी शेड टीयर्स. नेक्स्ट इज सॉक्स फीट में पहनते हैं, एंड क्रेविट जो है हम नेक में पहनते हैं. यस बेटा. एंड बेटा क्रेविट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रेविट इज अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ दैट मैन टाई अराउंड द नेक. इसको हम क्रेविट, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाई भी पर्सन वियर करते हैं ना, बट दिस इज नॉट टाई, दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ दैट सम मैन टाई अराउंड देयर नेक, जो गर्दन के आसपास लपेटते हैं, दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट क्रेविट. नेक्स्ट इज अटैक, हार्ट पे अटैक होता है. एंड स्टाई इज टू, स्टाई कहाँ पे फॉल करता है? आई पर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टाई? बेटा स्टाई होता है वो जो आँख के ऊपर एक छोटी सी फुंसी हो जाती है ना, अब पेनफुल स्पॉट हो जाता है जो हमारा आईलिड पर, दैट इज कॉल्ड स्टाई. वो बहुत पेनफुल होता है, मे बी स्मॉल इट इज, बट इट इज़ हाईली पेनफुल. बुक्स लाइब्रेरी में होती हैं, एंड एक्सपेरिमेंट हम कहाँ पर करते हैं? लेबोरेटरी में. वेयर डू वी डू एक्सपेरिमेंट्स? वी डू एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी. सो दिस इज अगेन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग योर टेस्ट योर विजडम, एंड आई होप योर approximate answers are okay. Go through them once again. Thank you students. Good.